देखिए, ये अटल जी के नाम से अटल इंक्यूबेशन सेंटर और नेताजी सुभाष चंद्र एनएसयूटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, इस प्रकार का एक इकोसिस्टम खड़ा किया जा रहा है जो अपने अपने तरीके से नए नए प्रोजेक्ट्स के आइडियाज को सोचकर आगे बढ़ाने वाले युवाओं को पैरों पर खड़ा होने का, जहां उन्हें फेलियर का डर ना हो, जहां उन्हें सक्सेस प्राप्त होने पर धोखे का डर ना हो, जहां उन्हें सही गाइडेंस ना मिलने का खौफ ना हो, ये प्रयास एनएसयूटी और एआईसी अटल इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा किया गया है। इससे दिल्ली के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत बल मिलेगा। साउथ वेस्ट दिल्ली, श्री एम चैतन्य प्रसाद, प्रोग्राम डायरेक्टर दीपाली उपाध्याय, नीति आयोग, डिस्टिंग्विश्ड ऑफिशियल दीपाक्षी जिंदल, नीति आयोग, विशाला रेड्डी, our guest, startup founders, industry leaders, faculty members. In this occasion, we are really excited with your presence, and I'm sure your presence has motivated all the students, all the innovators, faculty members, everyone here. And we also appreciate your commitment, your firm resolute to growing the ecosystem, innovation ecosystem in Delhi capital. So once again, on behalf of NSUT, I welcome Honorable Minister of Education. Now, this particular center actually going to help us in many ways. One, we will have more startups. We'll have student startups. We'll have faculty startups, and also, our employability of the students will also increase. There will be a lot of connection with the industry. The second advantage which I see, we'll be able to commercialize the technology. Right now the technology is in the lab. We want to commercialize it. Manufacture at scale. So that is the second thing. And the third thing which we are going to benefit, our ranking will improve. The NACs, the NBAs, they give a lot of weightage to innovation and entrepreneurship. So our ranking will go up with all these activities. Now this particular AIC, actually we have some objectives in mind. And this is, the board we have decided there are certain numbers that we have to meet during next 5 years. This project is for 5 years. The first is that we want to have more startups. There are numbers defined. Every year we should have so many startups by faculty, by students. And then we want to have more industry alliance, a lot of MOUs with the industry. We want to raise investment. Again, there are some figures, defined. Our CEO will have a tough time in meeting all those objectives. Because we are making a big leap. There are some moments in life, like summer watershed moments. पहले college में आते थे only for majority of the kids who are new to the society. उनका एक ही parameter होता है how successful is college is by placement. Today we are changing that. In that sense कि जो placement से आगे जा. So these are the things that we are entering today. I myself, I'm an engineer. So I've seen how things transformed in the last 15 years. I passed out in the year 2009. उनके बाद अगर देखा जाए, because nowadays, this is such a fortunate thing that ये जो platform है, this you're getting at a college level. The reason is now students can come up with an idea. The college, research park or AAC will help it incubate. In that sense, will give that time, because mainly the college students who are on the verge of passing out, उनके पास जो lacking, we all think it's money. It's not just money, it's also time. The reason is they're always under pressure from two sources. एक pressure होता है from society, एक pressure होता है from peers, that they have to prove something, they have to show themselves. So willingly or unwillingly, they get into a job. You all know, football World Cup चल रहा है. That other day, Messi has scored a hat-trick. Yesterday, Portugal का match चल रहा था. So Ronaldo didn't. But there is one common theme. Theme क्या है? Not everyone in the world will be fortunate to wake up early every morning, do what they want to do, and get paid for it. So this is where our passion can align, because there can be good days, there can be bad days. But when
दिल के अंदर से कुछ होता है ना, even on a bad day you can wake up, you can follow your passion and you can do it. So this is providing one such platform. I would want to encourage all students. Delhi is a city state. हमारा मेजोरिटी देखा जाए तो 3-4 ही प्रॉब्लम है, वाटर, सीवर, सैनिटेशन. एक और चीज है जो सर बताया, फायर का है. सो इफ वी आई मीन मॉडल और प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस टुवर्ड्स दैट, हमारा कंपेरेबल सिटीज 2-3 ही है. एक हो गया विद रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन डेंसिटी इन एरिया, टोक्यो, बीजिंग, परहैप्स न्यूयॉर्क. ओके, सो एटलीस्ट इफ वी मॉडल अराउंड दीज 4 थिंग्स, water, sewer, sanitation. Delhi ka majority of the issues for everyone are these 3 things. Of course, air pollution. I'm happy to see the startups that are coming today. We need to have homegrown solutions to our own problems. Second thing, ma'am, in pursuance to the discussion, I'm happy. अगर कुछ proposal है to support, please reach out to me. And we have many good placed institutes in around Delhi and Gurgaon for CSR. Will help setting up. Sir, I would like to take this opportunity एक बार एक चीज आपके सामने रखने के लिए. 4 days, Honorable Minister Sir is also Minister for Power. 4 days before, sir, I had an opportunity to go to Gurgaon and meet CMD REC, Rural Electrification Corporation, so the headquarters in Gurgaon. In pursuance of discussions, he made one thing, कि Chaitanya, if what are the projects, major projects that Delhi are doing, I would want to fund them. But एक caveat है, sir, I mean funding in respect to big universities, super specialty hospitals, आप बात कर रहे थे नरेला, I mean education city का. But the caveat he told is any project should be more than 500 crores. So sir, I mean he was also giving example of Maharashtra and Andhra Pradesh, where they have taken the help of REC to fund like 1800 crores one university super special thing, and perhaps इतना नजदीक रहते हुए we should be able to leverage, and अगर funding कुछ हो रहा है we will definitely, sir, I mean आपके संज्ञान में मैं ले आना चाह रहा था. I'm happy that I could get to meet you today. So with these things, I'm very happy to be a part of this. This college is also very close to my heart because my colleague batchmate and my wife has also studied from here. I wish all the best and thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir, for giving me so much. Sir, in India we have the world's largest blind population, but still this population have to suffer a lot. And sir, बोलते हुए बुरा लगता है कि 40% ऐसे लोग हैं, मतलब 40% से ना इनकी डेथ रेट ड्यू टू एक्सीडेंट है. तो सर इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम लोगों ने स्मार्ट केन लॉन्च किया. जो नॉर्मल केन होती है उनसे वो खाली देख सकते हैं कि रोड पे नीचे क्या है, बट ऊपर से क्या इशू आ रहा है उन्हें नहीं पता चलता. दैट्स वाई सर वी हैव क्रिएट दिस. एंड सर विद आवर स्मार्ट केन वी डिटेक्ट द ऑब्स्टिकल अप टू 3 मीटर्स. 3 मीटर में जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे वो डिटेक्ट करेंगे. और इसमें सर हम लोगों ने, सर आप देखो इसे पकड़ोगे आपकी भी फंडिंग सर. तो इसमें ऐसा होता है कि 3 मीटर की रेंज तक ये ऑब्स्टिकल डिटेक्शन करता है. 3 मीटर में कोई ऑब्स्टिकल आता है 1 टाइम वाइब्रेट. व्हेन द ऑब्स्टिकल कम इनटू द रेंज ऑफ 2 मीटर वाइब्रेट्स ट्वाइस, एंड इन 1 मीटर ऑफ रेंज इट कंटिन्यूअसली वाइब्रेट्स, एंड दैट्स व्हाई राइट नाउ इट इज कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग. एंड ऑल्सो सर वी हैव वर्क ऑन द सेकेंड मॉडल एज वेल, जिसमें हम इन सेंसर्स को रिप्लेस कर रहे हैं कैमरा से, एंड ऑल्सो प्रोवाइड अ ईयरफोन्स. सो अभी तक ऑब्स्टिकल डिटेक्शन हो रहा था, बट क्या है वो नहीं पता चल रहा था, बट लोगों को क्या पता है वो भी पता चलेगा. सर हमारी जो ब्लाइंड पॉपुलेशन है वो 2 वेज में, एक जो ना बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं, बट एक सर न्यू प्रॉब्लम भी आ गई है जिससे लोगों के आई सेल्स में इश्यूज आते हैं और वो बर्थ के बाद अपनी आंखें खो रहे हैं. जो लोग पहले वर्ल्ड देख सकते थे बट अब नहीं देख पा रहे, उन लोगों के लिए बहुत इश्यूएबल चीज़ है. दैट्स वाई सर हमारा सेकंड मॉडल उस चीज़ को अच्छे से टेकल करेगा. एंड सर इंडियाज फर्स्ट पर्सन जो इस टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं, वी हैव पेटेंटेड एज वेल.